Hello everybody, welcome back to the channel. Today we're going to be watching a Graphic Earth video, or I should say the Graphic Earth. Final released a new video called How India's Richest Region Became the Poorest. Now, I've not seen the video yet, but from my very vague understanding of what's going on, essentially the northern half, specifically like kind of around West Bengal, Calcutta, used to be the most wealthiest part, and that was because it was a very big trade hub. But then, within recent times, things have shifted. Now, the southern part of India typically is a little bit more wealthy, I guess. And again, I've not seen the video, so I don't quite know what exactly is going on. But from my understanding, typically the some of the cities in the southern part of India have a lot more of a focus on things like IT and new tech, while a lot of northern parts of India are still focused more on like the agricultural side of things. And typically, if your region is agricultural based, you're not going to have a lot of money. That's just the way it is all over the world. But yeah, without further ado, I say let's find out what the answer is, what Finnell thinks is. To be honest with you, I haven't even seen this. About this video. Should I read the about before we actually watch the video? I mean, we might as well. You probably have already started reading it. Do you know in 1950s Tamil Nadu was more poor than Bihar, Maharashtra, and Gujarat? Were poorer than Odisha and Uttar Pradesh. At that time, Eastern India was the economic hub. Bihar and West Bengal accounted for almost half. Really? But Bihar as well. Because isn't Bihar known as like the poorest state in India? Bihar and West Bengal account for almost half of the country's manufacturing output. What happened after? Question mark. How the richest region back then became the poorest now. Let's see. Okay, sure. I'm excited. I really like Finnell's work here with the Graphic Earth. It is one of my more favorite channels to watch. So yeah, make sure to go and subscribe, give Finnell a like, check out this video. The link to this video will be in the description down below. So please check that out. And without further ado, let's go ahead and get it started. Okay, look at these two maps carefully. ओके इन दो मैप्स को जरा ध्यान से देखिए। ये दोनों मैप्स एक ही डेटा दर्शा रहे हैं पोवर्टी रेट का, लेकिन दोनों की टाइमलाइन अलग अलग है। हमारा राइट वाला मैप है अभी रिसेंट 2022-23 के एस्टिमेटेड मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी रेट। Multi-dimensional poverty. Multi-dimensional. I love that term. Multi-dimensional. Interesting. Okay. Yeah, so as you can see, the poverty rate here in Bihar is the worst. Interesting. Okay. का, जबकि ये लेफ्ट वाला मैप है 1960 के Oh my God. 70% of the poverty rate. Okay, so so the poverty rate is just the people that are impoverished, the people that are in poverty. Well, I mean, if you look at the whole country as a whole, even Bihar, well, before it split, even to Jharkhand and Bihar, was 64%. Interesting. Huh. Okay. Interesting. पोवर्टी रेट का। कैन यू इवन बिलीव कि 1960s में तमिलनाडु का पोवर्टी रेट बिहार से ज्यादा था, महाराष्ट्र ओडिशा से ज्यादा पुअर था, जबकि गुजरात का पोवर्टी रेट उत्तर प्रदेश से ज्यादा था। आज ये समीकरण काफी बदल। Okay, so the real thing here that you got to take a look at is not necessarily, oh, the poverty rate is higher in Bihar these days than all the other states. It's just look how much of an increase, or I should say decrease, of the poverty rate is all throughout the country as a whole. Like, that's crazy. We went from double digits to single digits in a lot of the states, near half, 50, near 50% in some of the states, and then they're all the way down. That's crazy. Okay.
बदले हुए लगते हैं। नाउ लुक एट दिस, 1960 में स्टेट वाइज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, उस समय वेस्ट बंगाल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन में महाराष्ट्र और गुजरात के लेवल पर ही था। अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन तमिलनाडु के लेवल पर था। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में तो बिहार और वेस्ट बंगाल ये दो स्टेट्स ही भारत का 92% आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करते थे और भारत का 48% यानी करीबन आधा इंडस्ट्रियल Now, is the reason why that this was so high? I know I'm stopping the video. Listen, we're not even a minute into the video, 58 seconds. Is the reason this is because Calcutta was the like the trade hub when the British was around, but then after independence, it slowly got shifted around, and Mumbai is like the trade hub now, right? Like the port city, like the go-to port city. Is that right? I think so, right? I have no idea. Listen, I don't know much, but we'll watch the video. मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट भी सिर्फ ये दो स्टेट्स ही प्रोवाइड करते थे। क्या आज ये स्टेट्स मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन में कम्पीट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज बिहार और वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियलाइजेशन की रेस में दूर दूर तक नजर नहीं आते। भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आज गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका डोमिनेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज की ही बात करें तो वेस्ट बंगाल भारत का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के बावजूद स्टेट नंबर ऑफ फैक्ट्रीज के मामले में भारत में 11th पोजीशन पर है। सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट बिहार के कंपेयर में छोटे से राज्य पंजाब में 4 गुना ज्यादा फैक्ट्रीज है। झारखंड से ज्यादा फैक्ट्रीज तो हिमालयन स्टेट उत्तराखंड में है और पूरे ओडिशा राज्य में उतनी ही फैक्ट्रीज है जितनी स्मॉल वेस्टर्न यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में है, जबकि वो एरिया वाइज ओडिशा से 250 गुना छोटा है। And again, I'm sorry I'm stopping the video so much, but that's just my style, right? I like to talk, I like to interject. Is the reason why so many factories are now more focused on the West Coast because that's an easier route to get trade ships in and out? Because you can go from here to, like the Suez Canal a lot quicker than going all the way down and around India. I don't know. But then you can also say, well, then you have the straight by Indonesia and Malaysia and stuff, so you would think that the western side would be better as well. I don't know. Then of course you have the landlocked states up in the sister states, so the manufacturing there is always going to be a lot lower. But even then, look, you have Assam with 5,400 factories, number of factories. I don't know. We just need to watch the video to find out. आप भारत के किसी भी सोशल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डेटास देखें तो आपको रीजनल डिफरेंस की एक क्लियर लाइन आसानी से नजर आएगी। ये इमेजिनरी लाइन भारत को डेवलपमेंट के हिसाब से दो रीजन्स में बांटती है। लाइन के इस तरफ वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स यानी मोस्ट ऑफ कोस्टल स्टेट्स, ऊपर कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के आसपास का रीजन भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से डेवलपिंग रिच रीजन माना जाता है, जबकि सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन के कई हिस्से अभी भी अंडर डेवलप है और ये स्टेट्स डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसे हम भारत के जीडीपी पर कैपिटा के डेटा से भी आसानी से समझ सकते हैं। अब आयरोनिकली ऐसा भी नहीं है कि भारत के इस अंडर डेवलप रीजन में रिसोर्सेज की कमी हो या कुछ हो, बल्कि ये रीजन तो जियोग्राफिकली और नेचुरली भारत का सबसे समृद्ध रीजन है। यहाँ भारत की सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन है। हिमालयन रिवर्स के कारण सिग्निफिकेंट वाटर रिसोर्स भी है। भारत का सबसे ज्यादा मिनरल और नेचुरल रिसोर्स भी इसी रीजन में है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। भारत का मोस्ट पॉपुलस रीजन होने के कारण यहाँ सबसे ज्यादा यंग वर्कफोर्स भी है। तो फिर ऐसा तो क्या हो गया इंडिपेंडेंट इंडिया में कि भरपूर रिसोर्सेज होने के बावजूद भारत का ये रीजन डेवलपमेंट में इतना पीछे रह गया? एक कारण हम गेस कर सकते हैं कि इस रीजन के ज्यादातर स्टेट्स लैंडलॉक्ड है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कोस्ट लाइन सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सस्ता और आसान हो। लेकिन फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड भी तो लैंडलॉक ही है, यहाँ इंडस्ट्रीज ज्यादा कैसे है? और ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल कोस्टल स्टेट्स होने के बावजूद इंडस्ट्रियलाइजेशन में इतने पीछे क्यों है? There has to be something way more than this. Let's try to find out. My name is Fenil and आपने अभी ज्वाइन किया है द ग्राफिक अर्थ। वैसे लैंडलॉक स्टेट से याद आया, हमने रिसेंटली भारत के अपकमिंग ह्यूज वाटरवे प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो बनाई है। I remember this. I actually reacted to this one.
का यूज करके लैंडलॉक स्टेट्स को भी अब कोस्टल स्टेट्स के बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ये प्रोजेक्ट भारत के ट्रांसपोर्टेशन के लिए गेम चेंजर होने जा रहा है। आप उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। बैक टू द पॉइंट, आज भारत दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और अगर फ्यूचर प्रेडिक्शन सही रही तो भारत 2030 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर अमेरिका So by 2030, prediction-wise, country GDP, China the highest because everyone trades with China. USA, and then India in third, passing Japan, Germany, France, United Kingdom, Brazil. Brazil is so high because of their sugar production. Brazil's number one when it comes to sugar manufacturing. Interesting. Okay. Yeah, I was going to say it wouldn't necessarily be like landlocked states. I know, although that does have its detriment, but the like railway system and like just I guess it just need better infrastructure. Anyways. अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा नॉमिनल जीडीपी के मामले में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरी सभी बड़ी इकोनॉमीज के कंपेयर में भारत में शायद सबसे ज्यादा रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी असमानता है। वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर है जीडीपी पर कैपिटा। अगर हम छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरीज को छोड़ दे तो बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा है तेलंगाना में और सबसे कम जीडीपी पर कैपिटा है बिहार में। लेकिन इन दोनों के बीच डिफरेंस करीबन 6 गुना है। ये चाइना से कंपेयर करें तो चाइना में सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा जियांगसू प्रोविंस में है और सबसे कम है गांसू प्रोविंस में। लेकिन इनके बीच डिफरेंस सिर्फ 3 गुना ही है। अमेरिका की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क स्टेट में है और सबसे कम है मिसिसिपी स्टेट में। और which is crazy to think because Mississippi is like, you know, Mississippi, Louisiana, that's like prime area for like shipments and stuff. इनके बीच में करीबन 2 गुना ही है। ये twice as much. Interesting. I wouldn't want to live in New York. Like if I were to live in New York, maybe far away from New York City, complete other side, like maybe what is the town? Buffalo? I don't know. Anyways. Clearly दर्शाता है कि भारत में डेवलपमेंट काफी 5 times. Yeah, that's pretty high. That disparity is very, very high. इस अनइवन डेवलपमेंट के साथ साथ भारत में एक वियर्ड सिचुएशन है। भारत के सबसे कम विकसित राज्यों में सबसे ज्यादा आबादी है। अब ऐसी सिचुएशन शायद ही किसी कंट्री में होगी क्योंकि जनरली अगर किसी भी रीजन की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ ज्यादा वर्क फोर्स होगी, ज्यादा ट्रेड होगी, वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो वहाँ Okay, hold on. All right. So he did bring up a point, like the population in Bihar in that whole area there is a lot higher, right? So you have a lot more people vying and fighting for jobs, which means that typically businesses can afford to pay less because if you're not willing to take the pay at a less amount, there's going to be somebody else that's there to take it from you at that lesser amount. So jobs will keep lowering the amount of money they're willing to pay because there's always going to be somebody there that will take the job. But then what else? Like what else could be? Like I'm trying to wrap my brain around it before we actually get into like the meat of the video. What else could be a underlying cause? I guess maybe like the only thing I can really think of is like corruption in like the local governments, but I don't know. Okay. And then again, like I said at the beginning of the video, it's like I do know a lot of the southerns, like the bigger southern states like Bengaluru or Hyderabad, and it just has a very, very big focus on like IT and leading technologies and stuff like that. I don't know. We'll see. डेवलपमेंट भी कंपैरेटिवली ज्यादा ही होनी चाहिए। चाइना के मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस ग्वांगडोंग, शानडोंग, हेनान, जियांगसू और सिचुआन वहाँ सबसे ज्यादा डेवलप भी है या एटलीस्ट एवरेज है। अमेरिका में भी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले स्टेट्स कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया काफी डेवलप भी है। लेकिन भारत में कई कारणों के चलते ऐसा नहीं है। भारत के टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स में सिर्फ महाराष्ट्र ही है जो काइंड ऑफ बेहतर कंडीशन में है। यहाँ सबसे ज्यादा आबादी वाले कई
स्टेट्स सबसे ज्यादा अंडर डेवलप है। भारत के सिर्फ 3 सबसे कम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले स्टेट्स बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भारत की करीबन 29% पॉपुलेशन रहती है, जबकि चाइना के 3 सबसे कम एचडीआई वाले प्रोविंसेस तिब्बत, गुइजो और गांसू में चाइना की सिर्फ 4.7% पॉपुलेशन Really? रहती है। I इनफैक्ट don't चाइना know. के 10 लिस्ट डेवलप प्रोविंसेस में भी चाइना की टोटल सिर्फ 22% पॉपुलेशन ही रहती है, नो वेयर नियर टू इंडिया। अमेरिका में भी 3 लिस्ट डेवलप स्टेट्स में वहाँ की सिर्फ 2.2% पॉपुलेशन रहती है। इन देशों के पुअर रीजन्स में सबसे कम आबादी है, जिससे वो रीजन्स इन कंट्रीज के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर इतना असर नहीं डालते, जबकि भारत में ये पूरा उल्टा है। भारत अभी भी अपने सबसे ज्यादा आबादी वाले कई राज्यों के फुल पोटेंशियल को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। इंडिया के इस अनइवन इकोनॉमिक और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के चलते देश को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ऑब्वियसली भारत में भी हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ दशकों पहले तक हमारे भी सबसे ज्यादा आबादी वाले रीजन सबसे अमीर और प्रॉस्परस थे। अगर आप भारत के इतिहास को I'm देखें तो interested to दिल्ली से see. लेकर बंगाल तक का रीजन हमेशा से ही सब कॉन्टिनेंट का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटर रहा है। महाजनपद के टाइम से लेकर हाफ ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर तक 2500 साल पहले आयरन एज के दौरान सब कॉन्टिनेंट में 16 महाजनपद एस्टेब्लिश हुए थे। गंगा बेसिन की फर्टाइल जमीन और आयरन रिसोर्सेज के कारण यहाँ बड़े नगरों का विकास हुआ। लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के एज अ करेंसी डेवलप होने के बाद I love learning about this sort of stuff. The Indus Valley civilization. Like what my real fascination and passion for is the ancient civilizations. I don't know. It's just so exciting learning about it. Anyways, sorry. बेसिकली ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भारत में अर्बनाइजेशन की सेकंड वेव थी। 16 महाजनपद में से 6 महाजनपद पांचाल, कोशला, मल्ला, काशी, वत्सा और सूरसेना पूरी तरह आज के उत्तर प्रदेश में ही थे। इसी टाइम पीरियड में यहाँ बौद्ध और जैन फिलोसॉफीज भी डेवलप हुई। महाजनपद के बाद इस रीजन में नंदा, मौर्य, सोंगा, गुप्ता और पाला एम्पायर्स ने रूल किया। बिहार लिटरली बिकेम द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इन ईस्टर्न वर्ल्ड। आज से 1500 साल पहले गुप्ता एम्पायर के दौरान यहाँ दुनिया की सबसे पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा महाविहार एस्टैब्लिश हुई। नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान और इवन तुर्की से करीबन 10,000 Crazy to think how central and important that it was even back in quote unquote ancient times. से भी ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स स्टडी करने आते थे। इसके बाद यहाँ डोमिनेशन के लिए इस रीजन ने कई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स देखे। पहले हिंदुइज्म, I mean, बुद्धिज्म there still even is religious conflicts going on, especially in like that area in general, with between like Hindus and Muslims and stuff. It's kind of severe. और जैनिज्म के बीच, और फिर इस्लाम और धार्मिक Islam. I say Muslim. Islam is what I meant. के बीच, जिससे यहाँ के एंशिएंट आर्किटेक्चर को नुकसान हुआ। नालंदा महाविहार भी इसी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का विक्टिम बनी थी, जब 12th सेंचुरी के एंड में गुरिद डायनेस्टी के मिलिट्री जनरल बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय किया था। हालांकि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी इस रीजन की शान में ज्यादा कमी नहीं आई थी। मुगल एम्पायर के दौरान नवाब ऑफ बंगाल के अंडर यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, स्पेशली इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग विथ डाई टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल डिवाइसेस। यहाँ बेस्ट मसलिन कॉटन फैब्रिक बनता था, जो पूरी दुनिया में पॉपुलर था। इनफैक्ट बंगाल सूबा अकेला मुगल एम्पायर की करीबन 50% जीडीपी जनरेट करता था, जो कि पूरी दुनिया की I didn't realize it was 12% 50% of their GDP empire. थी। उस समय के 12% of the पूरे world वेस्टर्न GDP? यूरोप से भी ज्यादा। इस टाइम तक ये रीजन कई कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद सबसे ज्यादा समृद्ध See, था। I knew the wealth and richness in India. I didn't realize it was that high compared to the world's GDP at the time. लेकिन फिर आए ब्रिटिश। नवाब ऑफ बंगाल, बनारस किंगडम और सराउंडिंग प्रिंसली स्टेट्स के साथ 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद ईस्टर्न इंडिया में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस शुरू हुआ। भारत में बंगाल रीजन सबसे पहले ब्रिटिश कंट्रोल में आया। ब्रिटिशर्स ने इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स पर बैन लगाया और ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसने बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। बंगाल डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ। 1760s में बंगाल से लूटे हुए पैसों के दम पर ब्रिटेन में पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और जल्द ही ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का लीडर भी बन गया। और यहाँ ईस्टर्न इंडिया में इंडस्ट्रीज के खत्म होने के कारण ज्यादातर लोगों को मजबूरन फिर से ट्रेडिशनल इनकम सोर्स एग्रीकल्चर में दाखिल होना पड़ा। अब ब्रिटिशर्स का सब Yeah, of course. I mean,
the British basically looted and destroyed much of India to force them under their rule and thumb. Like he said in the video, they went through and they not only did they ban the practice of like creating things with their methods, they also stole that so they can make those methods in the British Isles. And then they also imposed tons of taxes and forced, basically forced the people to not necessarily grow crops that would benefit themselves, but to grow crops that would be sold so they can make money to give to the taxes, which just kind of ruined a lot of the soil, ruined a lot of the agricultural significances of the area. It's again. I mean, I've ever since the first time I started learning about India, I will say it. The British rule, it's devastating what they did to India, and not only I know I'm talking the like manufacturing and agriculture and stuff, but like the people as well. Like I'm learning about I've learned about so many like massacres and the harsh treatments, the inhumane way that the Indian people were treated by the British at the time. It's just truly it's terrible. It really really is. But man. सबसे बड़ा मोटिव यही था कि भारत से जितना हो सके उतना पैसा निकाला जाए, और जैसे कि उस समय भी मेजोरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई थी, तो ब्रिटिशर्स के लिए सबसे बड़ा इनकम का सोर्स जमीन का टैक्स ही था। ये टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमम कलेक्ट किया जा सके, इसके लिए ब्रिटिश इंडिया में मल्टीपल रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई। अलग अलग रीजन्स में बंगाल, बिहार, ईस्टर्न यूपी और उड़ीसा में परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी और जमींदारी सिस्टम लागू की गई। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जमीन I don't think I've learned about this. The multi-payment system. जाता था, जो ज्यादातर भूतपूर्व प्रिंसली स्टेट्स के राजा या अमीर अपर क्लास के लोग होते थे। जमींदारों के पास बेसिकली किसानों के जमीन का ओनरशिप राइट होता था और उन्हें अधिकार दिया जाता था किसानों के पास से टैक्स कलेक्ट करने का। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर टैक्स फिक्स कर दिया गया, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो, आपको फिक्स टैक्स ही भरना पड़ेगा हर बार। इस टैक्स के 11 भाग किए जाते थे, एक भाग मिलता था जमींदार को और 10 भाग पे किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। That's crazy. What? They took so much? जबकि रियोतवारी सिस्टम मद्रास, सिंध और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। इसमें किसान डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही टैक्स पे करते थे। यहाँ कोई मिडलमैन या जमींदार नहीं होता था। किसानों के पास ही जमीन की ओनरशिप भी होती थी जब तक वो टैक्स पे कर रहे हैं तब तक। यहाँ टैक्स कलेक्शन भी एग्रीकल्चरल आउटपुट से लिंक था, यानी ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो तो ज्यादा टैक्स भरना होगा एंड कम प्रोडक्शन हो तो कम टैक्स। और महलवारी सिस्टम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पंजाब, आगरा और सेंट्रल प्रोविंसेस में लागू किया गया, जिसमें पूरे गांव को ही एक सिंगल यूनिट यानी महल के रूप में कंसीडर किया जाता था। पूरे गांव का कंबाइंड टैक्स विलेज हेड या विलेज कमेटी कलेक्ट करती थी और फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे किया जाता था। अब देखा जाए तो रियोतवारी और महलवारी सिस्टम के कंपेयर में जमींदारी सिस्टम किसानों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान। So I wonder if that led to, I mean, so essentially what they're saying is in like what we're seeing here in the northern parts, the farmers didn't own the land. They gave it to a landlord or like a village head or whatever. Thus, they didn't have any land to pass down. Thus, there was no what's the term? Inheritance, like any inheritance, like a family inheritance. What is the word I'm looking for? Where you can pass along things to your children. I know inheritance is a word, but it's not the exact word that I'm looking for. I know there's another specific word. Either way, I wonder if that's what he's saying here is that could be a means of being harmful. हालांकि महलवारी और रियोतवारी में भी किसानों को बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन यहाँ किसान अपनी जमीन के they were owners of the land. Okay. फिक्स टैक्स नहीं था तो सूखे के टाइम भी उनको ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। बेसिकली किसानों के लिए काइंड ऑफ सिक्योरिटी थी, जबकि जमींदारी सिस्टम में लैंड ओनरशिप जमींदारों के पास होती थी। ज्यादातर जमींदार मोस्टली फार्मर्स का शोषण करते थे अपने फायदे के लिए। किसानों से ज्यादा टैक्स वसूला जाता था।
था, जिससे यहाँ के फार्मर्स की हालत बद से बदतर हो गई थी। इसके कारण यहाँ सोशल इनइक्वालिटी भी क्रिएट हुई। जमींदारी सिस्टम ने ईस्टर्न इंडिया में डीप रूटेड Yeah, I mean that could also, yeah, that does lead to a social inequality because the people that would own the land would be held at a higher status, and the people that didn't own any land, they're always going to be impoverished because they have no means of growth, right? Because they can never own the land. Interesting. Okay. See, this is something you learn something new every day, right, guys? And that's the beauty. That's the beauty of life is you go day by day. Ideally, you want to learn something new. You want to experience something new, and this is something I did not know before. So interesting. कास्ट और क्लास It's. बेस्ड I mean, नेटवर्क okay. So I say interesting. Like it's cruel. It's. I understand it's cruel, but it's. I'm trying to understand the history of India. I'm trying to understand the culture, the significance of India, and it's like this is an interesting part. Yes, it's a cruel time, and it's I couldn't even imagine the horrible lives that a lot of the people had to endure. But still, learning about it is something that is a necessity, right? And like this is something that I've like I said, I've never heard of this before. I've never learned about it. It's not taught. It's not spoken of. Like a lot of this stuff in and around India, a lot of my knowledge I had to learn by myself because I was never taught about it growing up. Um, so yeah, it's just I plan on trying to learn as much as possible and spread awareness as much as possible. I'm sure my friends and families, I'm sure my friends and family are tired of me just talking about India all the time. Whenever I meet with the family, I'm always talking about India. um, anyways, we should get on with the video here. और पॉलिटिक्स के बीज बोए, जिसका असर इस रीजन में आज तक है। फिक्स टैक्स होने के कारण जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी प्रयास नहीं किया कि यहाँ की एग्रीकल्चर कंडीशन इंप्रूव हो। यह वन ऑफ द रीजन था अलोंग विथ अदर मिसमैनेजमेंट ऑफ ब्रिटिश राज गवर्नमेंट कि ईस्टर्न इंडिया सबसे फर्टाइल और फूड सरप्लस रीजन होने के बावजूद ब्रिटिश रूल के दौरान यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा भूखमरी और फेमिन का सामना करना पड़ा। ब्रिटिशर्स के 200 Yeah, साल there के was so much कॉलोनाइजेशन famine पीरियड में and करीबन death. 60 to 100 मिलियन यानी 6 से 10 करोड़ इंडियंस ने भूखमरी और स्टारवेशन से अपनी जान गंवाई। लास्ट मेजर And see, फेमिन भी बंगाल this is something important to learn about as well. Like all these deaths and famines, again, not a part of like the standard history lessons of, at least here in the U.S. You're not learning about it. And it is something to be learnt about. You need to see the cruelty of humanity, right? You need to see how cruel and evil humanity can be, and this is a truly cruel and evil movement. में ही पड़ा था। द बंगाल फेमिन ऑफ 1943 ये 20th सेंचुरी का वन ऑफ द वर्स्ट मैन मेड डिजास्टर था, जिसने बंगाल में करीबन 30 लाख लोगों की जान ली थी। ये कोई जेनोसाइड से कम नहीं था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन And में to think आधे से ज्यादा that was happening at the same time during World War II and the Holocaust and the genocide of the Jews in Europe, and yet that's talked about all the time. But this is not talked about on the same level. This is equally on that level, and yet it's not talked about. टाइम तक कोलकाता ही ब्रिटिश राज की कैपिटल थी और बंगाल प्रेसिडेंसी ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और इकोनॉमी वाला प्रोविंस था। बंगाल ब्रिटिशर्स द्वारा सबसे ज्यादा शोषण किए जाने के कारण यह ब्रिटिश राज का सबसे रिबेलियस प्रोविंस था। बंगाली कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग बंगाली नेशनलिज्म और इंडिपेंडेंस की भावना थी। बंगाल ने भारत को शायद सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स दिए हैं और इवन बंगाली मुस्लिम ही पाकिस्तान मूवमेंट में भी सबसे ज्यादा एक्टिव थे, जिससे आगे चलकर टू नेशन थियरी के बेस पर भारत का बंटवारा हुआ। वैसे हमने बांग्लादेश की The two nation theory was terrible. If anything, they I don't know. The again, the more I learn about history, the more I learn that how just when the British again were dividing up other countries all around the world, they really messed a lot of things up. They really just were terrible about it, and it's led to so much conflict throughout the decades after. Um,
And you're seeing it. I mean, the two prime examples I can think of right off the bat, of course, is India, Pakistan, Bangladesh, and then of course like Israel and Palestine. I know that's a big thing everyone's talking about right now. It's, you know, the Israel Palestine issue, and that is an issue that was created by the British because the British had ruled over the area after the was the Ottoman Empire after World War One. Then after World War Two, they split the land into the two states for the Jews and the Muslims there. And that just led to conflict. You know, we had the 6 Days War, and then we have the recent conflict there as well. And it's just like, yeah, should have thought things through a lot clearer. And then it's not even. I say when I first said this is the Pakistan, India, and Bangladesh, but it's also China as well because they screwed up the linings of the territory up in the north, the northern parts, here and in the east, the sister states. Anyways, we should get on with the video. हिस्ट्री और जियोग्राफी पर भी एक डिटेल और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है, आप उसे भी जरूर देखिए। I also 1947 reacted to that पार्टीशन का video. सबसे ज्यादा असर ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पर ही हुआ। बंगाल रिलीजियस डिफरेंसेस होने के बावजूद हिस्टोरिकली हमेशा से ही एक सिंगल इकोनॉमिक, कल्चरल और इथनिक जोन के रूप में रहा था। ये पूरा रीजन एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड और डिपेंडेंट था। फर्टाइल ईस्ट बंगाल रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता था जो वेस्ट में कंज्यूम होते थे, जबकि इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट बंगाल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस करता था जो ईस्ट में कंज्यूम होते थे। पार्टीशन के बाद वेस्ट So yeah, that partition, of course, you know, they it messed up the trade route, like you said. The fertile parts would go to the factory parts, and then yeah, it was one cohesive unit. Now it's not anymore. Um, बंगाल ने बहुत Man. लंबे समय तक फूड शॉर्टेज का सामना किया क्योंकि ज्यादातर राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स अब ईस्ट पाकिस्तान में चले गए थे। वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रीज ने भी सबसे ज्यादा सफर किया। जूट, पेपर और लेदर इंडस्ट्रीज का पूरा रॉ मटेरियल ईस्ट बंगाल से ही आता था। ईस्ट बंगाल ही बंगाल का करीबन 80% जूट प्रोड्यूस करता था। पार्टीशन के बाद वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रीज में रॉ जूट की कमी हो गई, जबकि ईस्ट बंगाल के जूट फार्मर्स के पास मार्केट ही नहीं बचा अपने रॉ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। इससे दोनों ही रीजन्स के इकोनॉमिक कंडीशन पर असर हुआ। अब देखें तो भारत के इंडिपेंडेंस के बाद सोशली और इकोनॉमिकली राज्यों के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं था। हाँ, कुछ कोस्टल रीजन्स और सिटीज जिनके पास नेचुरल ट्रेड बेनिफिट था और जिन्हें ब्रिटिश रूल के दौरान और भी डेवलप किया गया था, वो थोड़े ज्यादा विकसित थे, लाइक बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। जैसे हमने पहले बात की I forgot that it was Bombay. That's some of the earlier names, and I mean they're still changing names even now. It's hard to keep up, but yeah, some of the earlier names are interesting. 1960s के पॉवर्टी रेट की तो हम देख सकते हैं कि स्टेट्स के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और बिहार की कंडीशन बाकी राज्यों से थोड़ी अच्छी ही थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे समीकरण को ही बदल कर रख दिया। उस समय भारत में ह्यूज पॉवर्टी का कारण था हमारी कमजोर अर्थव्यवस्था। आजादी के बाद भारत लंबे समय तक सिर्फ एक कृषि आधारित इकोनॉमी ही थी, लेकिन अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्लोबली सक्सेसफुल होना है तो उसके पास एक मजबूत इंडस्ट्रियल सेक्टर होना बहुत जरूरी है। ये रोजगार क्रिएट करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और अल्टीमेटली किसी भी सिविलाइजेशन को मॉडर्नाइज करता है। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर को भी बूस्ट करता है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी बुरी कंडीशन में था। उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर भारत की इकोनॉमी में 11.8% ही कंट्रीब्यूट करता था। अगर इसे कंपेयर करें आज से, तो आज 2024 में इंडस्ट्रियल सेक्टर भारत की इकोनॉमी में करीबन 30% का कंट्रीब्यूशन करता है। इंडिपेंडेंट के बाद भारत दुनिया से कम्पीट कर सके, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनानी शुरू की। अब किसी भी रीजन में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए सबसे जरूरी होता है इजी, चीप और कांस्टेंट रॉ मटेरियल और मिनरल्स का सप्लाई। इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा खर्चा ट्रांसपोर्टेशन में ही करना पड़ता है, पहले रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक लाने के लिए और फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट तक पहुंचाने के लिए। तो इकोनॉमिकली इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग रीजन और पोर्ट से जितना नजदीक होगी उसके लिए वो उतना ही प्रॉफिटेबल होगा। अब भारत में सबसे ज्यादा कीमती मिनरल रिसोर्सेज का भंडार ईस्टर्न इंडिया के छोटा नागपुर प्लेटो में ही है। यहाँ भारत का 80% कोल डिपोजिट, भारत का 40% आयरन और 50% से ज्यादा माइका और बॉक्साइट, 95% काइनाइट और भारत का 90% से ज्यादा कॉपर रिसोर्स डिस्कवर हुआ है। That's crazy. I didn't realize 90% of the copper for I mean, I knew it was very the coal industry was huge there, but I didn't realize it was also like
90% of the copper, kyanite. I don't even know what kyanite is, but it's got 95% of the kyanite there. 40% of the iron ore. Okay. तो इस रीजन और उसके सराउंडिंग स्टेट्स लाइक बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश को पहले से ही एक नेचुरल बेनिफिट था। And the reason that's like that is because there's it's like a plateau there as well, right? I don't know. I don't know. I'm trying to remember the geography. Like it's raised higher in like specifically in that area, but I don't know. इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कोस्ट लाइन और पोर्ट्स भी यहाँ Maybe से it's ज्यादा not. दूर I don't नहीं know. थे जिससे ट्रेड में कोई परेशानी हो। यहाँ Maybe there's just what am I thinking? What am I thinking? Maybe it's just a deposit base because of all the rivers flowing out of the Himalayas. No, that's not it. There's like a specific reason that, like, I've even remembered people saying that it's like it does raise up higher there. Like it's not like a huge plateau, but there's like a plateau of some sorts in Jharkhand. I don't know. Someone will tell me in the comments, I'm sure. तक कि इंडिपेंडेंस के पहले तक मेजर बिजनेस हाउसेस जैसे टाटा और दालमियास ने बिहार में ही अपनी इंडस्ट्री सेटअप की थी और भारत की ज्यादातर इंजीनियरिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी वेस्ट बंगाल में ही थी। जैसे हमने पहले बात की 1950 में ये दो स्टेट्स ही भारत का 48% गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे। आजादी के 5 साल बाद 1952 में भारतीय सरकार ने देश में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की। इस पॉलिसी के अंडर अब इंडस्ट्रीज के लिए एसेंशियल आइटम्स जैसे मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, स्टील और सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इंडस्ट्रीज को सब्सिडी प्रोवाइड करेगी ताकि एक कांस्टेंट प्राइस पर मटेरियल्स पूरे देश में उपलब्ध हो सके। यानी अब बोकारो से पटना या कोलकाता मिनरल ट्रांसपोर्ट It's good for the growth of the country if the government subsidizes the transportation. That's pretty good. करने के लिए जितने पैसे लगते थे उतने ही पैसों में अब मिनरल्स बोकारो से मुंबई, चेन्नई और लुधियाना तक भी पहुंचाया जा सकेगा। इसने बेसिकली मिनरल रिच स्टेट्स के पास जो नेचुरल एडवांटेज था वो छीन लिया। वैसे गवर्नमेंट ने तो एक गुड विजन से ही इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था ताकि पूरे भारत में ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ना कि सिर्फ कुछ मिनरल रिच स्टेट्स के आसपास। इस पॉलिसी से बाकी स्टेट्स को तो फायदा हुआ, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट से मिनरल रिच स्टेट्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ट्रांसपोर्टेशन का फैक्टर हट जाने के कारण अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे जरूरी फैक्टर्स थे चीप और इजी जमीन और लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी, नजदीकी पोर्ट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड होते डिफरेंट बेनिफिट्स। इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने से पहले इंडियन रेलवे पर 1 टन स्टील को जमशेदपुर से हावड़ा ट्रांसपोर्ट करने के लिए 30 रुपीज का खर्चा आता था, जबकि 1 टन स्टील को जमशेदपुर से मुंबई ट्रांसपोर्ट करने के लिए उससे 4 गुना 120 रुपीज का खर्चा आता था। अब फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के बाद कैलकुलेशन कुछ इस तरह किया जाता था कि इन दोनों रूट के खर्चों को मिलाया जाता था, यानी 150 रुपीज, फिर इसे इक्वल डिवाइड करके दोनों पर लागू किया जाता था। यानी अब दोनों रूट के लिए सेम अमाउंट 75 रुपीज पे करने पड़ेंगे। कोलकाता के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जो 90 रुपीज पर टन का लोकेशन एडवांटेज था अपने मुंबई कॉम्पिटिटर के तुलना में, वो लॉस हुआ, बल्कि अब कोलकाता के इंडस्ट्रियलिस्ट को पहले के कंपेयर में 45 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे सेम मटेरियल को पाने के लिए। जबकि that must have really cut into the cost of the companies that were trying to get this stuff shipped to them. Because I mean, you just imagine that's more than 50%. That's crazy. Okay, but it was significantly cheaper for everywhere else. इंडस्ट्रियलिस्ट के अब 45 रुपीज बचेंगे पर 1 टन, जिसके कारण वेस्ट बंगाल, बिहार और ओडिशा की कई इंडस्ट्रीज लॉस में चली गई और दूसरे रीजन्स की इंडस्ट्रीज से कम्पीट नहीं कर पाई। इंडस्ट्रीज ने ईस्टर्न इंडिया को छोड़कर वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में ट्रांसफर होना शुरू कर दिया। स्पेसिफिकली बड़ी सिटीज और पोर्ट रीजन्स लाइक महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, गुजरात में अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, कर्नाटका में बेंगलुरु, तमिलनाडु में चेन्नई, पंजाब और दिल्ली, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डेवलप हो चुका था और लेबर फोर्स भी अवेलेबल था। पॉइंट टू बी नोटेड कि एफईपी पॉलिसी सिर्फ कुछ गिने चुने लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल्स पर ही लागू हुई थी, ना कि सभी रॉ मटेरियल्स पर। यह पॉलिसी कॉटन पर लागू नहीं हुई थी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल था। कॉटन ईस्टर्न इंडिया को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर उगाया जाता था। पॉलिसी के अंडर 1 टन कोल को रानीगंज से लुधियाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए 49.2 रुपीज का खर्चा आता था, लेकिन उतने ही अमाउंट में कॉटन को फजीलका से हावड़ा ट्रांसपोर्ट करने के लिए उससे 3 गुना से भी ज्यादा। Okay, so wait, what is this disparity? Why didn't the government just subsidize all
transportation. Why focus on just the mineral transportation and not the goods or the raw materials like cotton? That doesn't make any sense to me. There's going to be huge 165.7 disparity. रुपीस का खर्चा आता था क्योंकि कॉटन पॉलिसी में ना होने के कारण इस पर सब्सिडी नहीं मिलती थी। फ्रेट इक्वलाइजेशन के अंडर जब इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ईस्टर्न इंडिया से वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में शिफ्ट हो रही थी, तब वेस्टर्न स्टेट्स ने कॉटन पर भी अपनी हेजेमनी बनाई ही रखी, जिससे ईस्टर्न स्टेट्स को एटलीस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक सेटअप Yeah. करने का मौका नहीं मिला। अब सोचे तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वेस्ट बंगाल से अपने विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को गुजरात में सेटअप करने की सोच सकता था, अगर उसे गुजरात में ज्यादा चीप लेबर और सब्सिडाइज जमीन मिले, क्योंकि टरबाइन का रॉ मटेरियल स्टील एफईपी पॉलिसी में कवर्ड था। लेकिन एट द सेम टाइम कोई टेक्सटाइल सेक्टर का इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी कॉटन मिल को महाराष्ट्र से बिहार में शिफ्ट करने की कभी नहीं सोच सकता, क्योंकि कॉटन तो महाराष्ट्र में ही चीप मिलता, एज कॉटन वाज नॉट सब्सिडाइज अंडर एफईपी। रिसोर्स रिच होने के बावजूद ईस्टर्न स्टेट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन में बाकी स्टेट से हार रहे थे। Yeah, because then, oh, wow. Okay, so this is also something that I just didn't know about. This is something new that I'm learning about. Um, so at a glance, it did appear that the subsidization of the raw materials was beneficial, but at the same time, they didn't subsidize the transportation of most of the material. Uh, and it just left these places to suffer. So these states are just now focused on sending out these minerals, and they don't have any further growth there. So you're not getting big industries, you're not getting big factories, because there's just going to be more. It's more cost effective to be further away. Um, interesting, interesting. रिसोर्स होना जैसे उनके लिए श्राप साबित हो रहा था। ये एक रिसोर्स कर्ज का फिनोमेना है जो भारत के अलावा और भी कई जगह देखा गया है, स्पेसिफिकली I was gonna say this is like Africa is a huge. This is huge in Africa. They all the mines there just send everything out of those areas, so those areas remain poor and destitute. And even then, a lot of the people working the mines, unfortunately, are slaves. So it's not like they have a say in getting a better life for themselves, anyways. But still, the same thing. मिनरल रिच अफ्रीकन कंट्रीज में, जो आज भी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज है, क्योंकि इनके मिनरल्स के बेस पर यूरोपियन कंट्रीज डेवलप हुई थी और आज भी Yeah. डेवलप हो रही है। वैसे फ्रेट I इक्वलाइजेशन like how he बेस पर included यूरोपियन कंट्रीज France over here, and then these are the British islands that are controlled by Britain. I like how he included these. That's nice. Thank you. डेवलप हुई थी और आज भी डेवलप हो रही है। वैसे फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म अफेक्टिंग पॉलिसी थी। इसका इम्प्लीमेंट होने के बाद डायरेक्ट इमीडिएट असर नहीं दिखा, असर दिखने के लिए भी दशकों का टाइम लगा। 1952 में पॉलिसी लागू हुई थी, लेकिन फिर भी आजादी के बाद एक दशक तक बिहार फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल स्टेट था। 1951 टू 1961 के बीच बिहार का इंडस्ट्रियल आउटपुट 75% ग्रो हुआ था, मच मोर देन नेशनल एवरेज ऑफ 41%, जिससे बिहार में 1 लाख से ज्यादा नई जॉब्स क्रिएट हुई थी। लेकिन फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का असर शुरू होने के बाद बिहार का ये इनिशियल इंडस्ट्रियल बूम डिस्ट्रॉय हो गया। इसी के साथ वेस्ट बंगाल बॉम्बे से अपना इकोनॉमिक प्रभुत्व हारने लगा। बाय 1960s वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रीज सिर्फ 8.87 लाख लोगों को रोजगार दे रही थी, जबकि बॉम्बे की इंडस्ट्रीज अब 13.57 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही थी। 1951 में कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा पोर्ट था, जो एनुअली 9.4 मिलियन टन कार्गो हैंडल करता था, कंपेयर टू बॉम्बे 7.5 मिलियन टन। बाय 1968 कलकत्ता पहले से चौथे नंबर पर आ गया विथ जस्ट 7.9 मिलियन टन कार्गो, कंपेयर टू फर्स्ट बॉम्बे 19 मिलियन टन, मार्मुगांव 8.8 मिलियन टन और विशाखापट्टनम 8 मिलियन टन। देश का इकोनॉमिक सेंटर अब धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया से वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा था। वेस्टर्न कोस्ट पर अहमदाबाद, बड़ौदा। So this also explains more of the economic shift, because at the beginning of the video I was like, oh, a lot of the exports in the port cities were on the western side because I thought it'd be easier for like to get access to the Suez Canal, but it's also apparently cheaper for a lot of products there. Because of the disparity and the subsidized transportation. So there's more factories there. Some of the products that are being made there, being harvested there, they wouldn't be sent off over to the eastern side because it's more expensive. So it's just easier to have them there. Interesting. Huh. Okay.
बॉम्बे पुणे इंडस्ट्रियल बेल्ट ने ईस्टर्न कोस्ट के कलकत्ता आसनसोल धनबाद इंडस्ट्रियल बेल्ट की जगह ले ली थी। पिछली हाफ सेंचुरी में वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स जिनको फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ, वहां भारत की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देखी गई, जबकि ईस्टर्न इंडिया जो पहले मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस था, वो आज भारत का पुअरेस्ट रीजन है। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने भारत में असमान विकास किया। 1993 में यह पॉलिसी हटाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पॉलिसी के पीरियड में जो भी थोड़ा बहुत वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उससे एटलीस्ट वहाँ कंज्यूमर मार्केट बनी, वो डेवलप हुए और वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, जिससे उन्हें 1991 के बाद शुरू हुए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में भी सबसे ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी सबसे एलिजिबल स्टेट्स यही थे। इनफैक्ट हमारे प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर और प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी एक्नॉलेज किया है कि मिनरल रिसोर्स और फर्टाइल लैंड होने के बावजूद बिहार और झारखंड की बैकवर्डनेस के पीछे कारण यूनियन गवर्नमेंट की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ही है। हालांकि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ही अकेला फैक्टर नहीं है ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के बैकवर्डनेस के पीछे, बल्कि लोकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ऐतिहासिक कारण, नेचुरल चैलेंजेस, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशन और केंद्र सरकार का कंटिन्यूअस इग्नोरेंस और नाकामी, ये सभी फैक्टर्स के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट के कारण ये रीजन आज बाकी राज्यों से डेवलपमेंट में पीछे रह गया है। भारत में फर्स्ट टू 11th 5-year प्लान पीरियड 1951 से 2012 के बीच I've not heard of this one. के अंडर उत्तर प्रदेश और बिहार को भारत में सबसे कम पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एलोकेट किया गया। मोस्ट ऑफ द टाइम भारत के नेशनल एवरेज से आधे से भी कम। फर्स्ट फाइनेंशियल प्लान पीरियड 1951 to 56 में पंजाब को उत्तर प्रदेश और बिहार से 5 गुना ज्यादा सेंट्रल फंड मिला डेवलपमेंट Whoa, okay, so के interesting. लिए। ये पैटर्न अगले कई दशकों तक चली। इस पूरे टाइम पीरियड में हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बिहार और उत्तर प्रदेश के कंपेयर में डबल से भी ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव किया। So early on, because I know I see a lot of comments of people complaining that a lot of financial aid gets sent to like Bihar, for example. But it's interesting seeing that back in the day, just a few decades ago, it was the other way around. The financial support was going to the other states. ऑलरेडी बिहार और उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर रिलेटिवली अविकसित था, तो उनका फाइनेंशियल रिसोर्स बेस और स्टेट टैक्स कलेक्शन क्षमता भी कम थी। कमजोर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के चलते बिहार और उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के स्पॉन्सर्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड मैचिंग अपने खुद के स्टेट फंड्स मैनेज करने में भी असक्षम रहते थे, जिससे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत डेवलपमेंट फंड मिलता था, वो भी ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाता था। कई बार इन स्टेट्स के हिस्से के अनयूज्ड फंड्स को दूसरे ज्यादा एफिशिएंट साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता था, और जैसे कि रिसोर्स एलोकेशन पार्टली रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार को और भी कम फंड एलोकेट होने लगा। इसने अंडर डेवलपमेंट की एक ब्रूटल साइकिल बना दी। पॉलिटिकल फेलियर भी बड़ा रोल प्ले करता है। रिसोर्स रिच रीजन में रिसोर्सेज के कंट्रोल के लिए कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो वायलेंट पॉलिटिक्स, नक्सलिज्म, वीक डेमोक्रेसी, क्राइम और गैंग कल्चर में बढ़ोतरी, अनस्टेबल गवर्नमेंट और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। Yeah. ऐसी ही कुछ This I also knew this was a major problem in this region as well. Maoism and like Chandigarh and Jharkhand were known for what was it? Like I remember one of the videos early on that I was watching telling me the history of like in Chandigarh specifically, like it wouldn't be uncommon to like drive through and see gangs with a bunch of guns and stuff. I guess it's not the case anymore, which is good. But yeah, I think it was the Naxalites. Is that the word Naxalites? I don't remember the specific name or term or anything used, but सिचुएशन बिहार और वेस्ट बंगाल में बहुत लंबे समय तक थी। 1977 से 2011 यानी 34 साल तक वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पावर में थी अंडर यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट। as a pure-blooded American, it's weird to say. I was gonna make a whole meme and joke about as an American, I'm staunchly opposed to communism, which I am. All right, I memes and jokes aside, I am opposed to communism as an American. It's just in my blood, in my DNA to not like communism.
कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने ब्रिटिश रूल से चली आ रही डीप रूटेड जमींदारी और सोशल इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश की। 19 लाख से ज्यादा लैंडलेस फार्मर फैमिलीज को जमीन रीडिस्ट्रीब्यूट करके I just realized, yeah, this okay. So one of the major reasons why they could have the communism had such a strong holding is because the way that the British took taxes there, like a landlord owned all the land, and then the people didn't own the land. So of course, I get it now. I understand now why communism was so strong is because the people had nothing. They had no family inheritance. They had no land given to them. So of course they would go to communism because they felt like they had nothing interesting. Okay. लेकिन इसी के साथ उन्होंने जैसे वेस्ट बंगाल के इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी रिजेक्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई कंट्रोवर्सीज हुई, कई इंडस्ट्रीज तो स्टेट छोड़कर भी चली गई, हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हुई। उत्तर प्रदेश और बिहार में डीप रूटेड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग थी। लोग डेवलपमेंट के बजाय कास्ट के I still have a huge issue with the caste system. I've talked a lot about it, like specifically in my Discord and stuff, and with people, and it's just I'm staunchly opposed to any and all forms of the caste system. बेस पर अपना वोट डालते थे। कम्युनल पॉलिटिक्स और वीक लीडरशिप के चलते यहाँ सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। 1961 टू 1990 के बीच 30 सालों में बिहार में 20 बार गवर्नमेंट बदली, जिसमें से कोई भी गवर्नमेंट अपनी 5 साल की टर्म भी पूरी नहीं कर पाई। जबकि उत्तर प्रदेश में 1991 से 2002 के 12 साल के टाइम पीरियड में 8 बार गवर्नमेंट चेंज हुई और 3 बार प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ। एज अ रिजल्ट यहाँ ज्यादातर सरकारें अपनी वीक कैपेसिटी के कारण लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में निष्क्रिय रही। इन्वेस्टमेंट के लिए कॉस्ट और रिस्क भी बढ़ गया, जिसने इन्वेस्टर्स को दूसरे सेफ स्टेट्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया। अब इस टाइम पीरियड में साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स ने एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर ज्यादा फोकस किया। 1991 के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के दौरान भारत की इकोनॉमी दुनिया के लिए ओपन हुई। भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ शुरू हुई। 90s में फोर्ड, टोयोटा, होंडा, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, पैनासोनिक जैसी कंपनीज ने ऑब्वियसली वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स को ही चुना। तब से लेकर आज तक भारत में हो रहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यही स्टेट्स डोमिनेट कर रहे हैं। 1991 टू 1998 के बीच बिहार में भारत का सिर्फ 0.1% और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1.96% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Interesting. See, I didn't account for this as well. Well, kind of, sort of. I knew, like, when I say tech industry, this is kind of what I meant. Interesting. So much. जबकि पर कैपिटा एफडीआई महाराष्ट्र में 5019 रुपीज था, वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 289 रुपीज और बिहार में तो सिर्फ 89 रुपीज ही था। इवन आज भी कुछ ऐसा ही हाल है। 2019 से 2023 के बीच भारत का ओवरवेलमिंग करीबन 75% फॉरेन even now. Wow. इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4 स्टेट्स महाराष्ट्र, कर्नाटक। Oh, in just those 4 states. Wow. Okay, whoa. Poor Goa and Kerala here being left out. का गुजरात और तमिलनाडु में ही हुआ। Wait, he had Okay. सिर्फ 4 स्टेट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु में ही हुआ। एफडीआई इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ड्राइविंग फैक्टर कंसीडर किया जाता है। हाई एफडीआई इनफ्लो की वजह से साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स की इकोनॉमिक ग्रोथ भी सेंट्रल और ईस्टर्न स्टेट्स से हाई रही है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद ओवरऑल भारत की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रही थी। लेकिन सेंट्रल और ईस्टर्न अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वीक इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर के चलते इन राज्यों की इकोनॉमी लंबे समय तक एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश में आज भी करीबन 80% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। उत्तर प्रदेश की 24.8%, बिहार की 22.3%, वेस्ट बंगाल की 23.53%, ओडिशा की 21.27% और मध्य प्रदेश की मैसिव 43.86% इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है। सिग्निफिकेंटली हायर देन
मोस्ट ऑफ साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स। अब Double, एग्रीकल्चर triple, सेक्टर लो quadruple the पेइंग amount. लेबर जॉब्स के अलावा दूसरी हाई पेइंग जॉब्स ज्यादा मात्रा में नहीं क्रिएट कर सकता, जो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर कर सकते हैं, जिससे ईस्टर्न और सेंट्रल स्टेट्स में रिक्वायर्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी है। यहाँ के यूथ को दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट करना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, Yeah, मध्य that's something else. Is yeah, प्रदेश और because you even see that here in the U.S. If the younger generation, they're going to school, right? They're going to get a degree. They don't necessarily want to stay around and work the lower paying agricultural jobs. They want to go to a big sector and get a nice high paying job. And like I said, you see that here even now. Here in the U.S., states like Nebraska, South Dakota. I mean, I've witnessed it myself in South Dakota. It's it's not a very good place to have a very high paying job. There's not a lot going around. Most of the jobs are agricultural based or centered around that. Um, and yeah, you have people that, travel for schoolings, or they go to a different state for schools, for university, colleges, and then they get those degrees and they can't use those degrees back at their hometown, their home state. So what do? They move to other states where they can actually get those jobs and get money. Thus, you just leave behind the lower income people, the poorer people, and the people that are just working the lower income agricultural jobs. So you don't have that constant buildup that you need to build a better future, build a better tomorrow. You don't have the people there, the people that would probably be making those high sector factory, like somebody that would make a new factory, for example. You're not having them there because they're moving to other places to get a job that will pay more. Anyways, anyways, तो anyways, राजस्थान anyways. अराउंड 50% इंटरस्टेट माइग्रेंट्स का ओरिजिन है, जो मोस्टली इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स की तरफ माइग्रेट करते He हैं। said हालांकि ये माइग्रेंट्स 50%. रिस्पेक्टिव Wow. स्टेट्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान करते हैं और ये भारत के अर्बनाइजेशन में बहुत जरूरी भी है। लेकिन इसी के साथ ये माइग्रेंट्स होस्ट Oh, that's scary. There's something about the train moving and people are getting shoved in and out. स्टेट्स और सिटीज के That's लिए कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट terrifying. करते हैं। मेट्रो सिटीज में ओवर पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक चेंज, और अगर गवर्नमेंट सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को Ooh, सफिशिएंटली that unlocked a new fear. Imagine just being like crushed and trampled or falling in between like this the train and the terminal. Oh my God. डेवलप करने में फेल रहती है तो लेक ऑफ रिसोर्सेज के कारण मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऑलरेडी भारत की कई मेगा सिटीज ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। भारत को जल्द ही अपने सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले अंडर डेवलप्ड स्टेट्स को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाकर अभी जो रीजनल आर्थिक असमानता है उसे कम करना ही होगा, अगर हमें ओवरऑल एज अ कंट्री डेवलप होना है तो। और तभी भारत स्टेबल रहकर दूसरी इकोनॉमी से कम्पीट कर पाएगा। हालांकि धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में स्टेट वाइज कर्नाटका और तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश, ओडिशा और आसाम में सबसे ज्यादा पर कैपिटा ग्रोथ देखी गई, 224%, 206% एंड 204% रिस्पेक्टिवली। नीति आयोग के अनुसार भारत में पिछले 9 इयर्स में नियरली 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फ्रॉम 29.17% इन 2013-14 टू 11.28% इन 2022-23। इस टाइम पीरियड में उत्तर प्रदेश में 5.9 करोड़ लोग, बिहार में 3.7 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.3 करोड़, राजस्थान में 1.8 करोड़, वेस्ट बंगाल में 1.7 करोड़ और ओडिशा में 1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। पुअरर स्टेट्स में सबसे ज्यादा पॉवर्टी डिक्लाइन रिकॉर्ड किया गया, जो इंडिकेशन है डिस्पैरिटी के कम होने का। लेकिन अभी भी स्टेट्स के बीच सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक असमानता है। होपफुली ये फ्यूचर में कम हो। इंडियन गवर्नमेंट कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। Yeah, and that's what's needed is these higher infrastructure capabilities connecting uh just connecting these different sectors, these different locations is going to be highly important. And that of course will always bring more traffic, more wealth in and out, more opportunities. So
ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डेवलपमेंट को केंद्र में रखकर लुधियाना से कोलकाता तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पालघर से कोलकाता तक वेस्टर्न डीएफसी और विजयवाड़ा से खड़गपुर तक ईस्टर्न कोस्ट डीएफसी रेल लाइन। इसी के साथ वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, खड़गपुर सिलीगुड़ी इकोनॉमिक कॉरिडोर, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, रायपुर रांची धनबाद एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे एंड मेनी मोर, गंगा और ब्रह्मपुत्र इंलैंड वाटरवे, कोलकाता सितवे कालाधान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट और इंडिया म्यांमार थाईलैंड। I was gonna say Myanmar. They're having jobs or having things set up with Myanmar and apparently Thailand too. That's ट्राइलेटरल cool. हाईवे। A highway through Myanmar. Is that safe? I know Myanmar is like a very there's a lot of turmoil, a lot of conflict in Myanmar. Is that safe? What was Myanmar called before? What was it called? Man, that's gonna bother me if I can't remember. Burma. I think it was called Burma, right? ये कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है जो ईस्टर्न इंडिया के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे, जिससे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूज इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक बूस्ट होने की उम्मीद है। आप कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि हमारे ईस्ट और सेंट्रल स्टेट्स अपनी ऐतिहासिक ग्लोरी फिर से हासिल कर पाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It was a good video. That was a very good video. Yeah, Fennel always makes really, really good videos. I highly recommend it. Again, go and check out the video in the link below. Make sure to go and watch the channel, subscribe to the channel, rewatch this video. Yeah, I really, really liked it. This was great. This is I learned a lot. I genuinely learned a lot from this video. A lot of things that I didn't know before. So yeah. I loved it. These are the type of videos that I really, really enjoy watching. Yeah. Again, go check out the channel. Go like this video. Subscribe to that channel. Oh wow. I think it's time, as we do with pretty much every reaction video now, to read the comments. So I'm expecting some good things in the comments. There's always a lot of praise in the comments. There hasn't been a video where you don't see much praise. I guess like some of the geopolitical videos that I've watched, you get a lot of negative comments in like the news section, but typically it's a lot of praise. And I would say this video deserves quite a lot of praise, and you also get additional insight in the comments as well. That's one of the reasons I like reading comments, is because yeah, sure, you get to see the people praising and enjoying the content creator, but you also get some new information, some further explanation as well. So yeah, we're gonna go read the comments. What a presentation! More than a movie and documentary, I would like to appreciate your efforts on below: research analysis, data visualization, explanation flow, animation, and overall outcome. And I'll also add to that, he made it understandable for foreigners as well, like myself. So, top-notch stuff. Save Northeast from Bangladesh. Doesn't matter, Hindu, Muslim, all are Bangladeshi. Save Northeast from Bangladesh? Long answer short, education literacy, asking questions to politicians. In a circle of life, poor becomes rich and rich becomes poor. During king rule, Pandyan kingdom was very rich. I'm very much from Dhanbad, Maine, Odisha. Despite Odisha being a mineral-rich state and having a coastline of 480 kilometers from Uttar Pradesh, it is still well known today. Thank you. India is a country that has Silicon Valley like Bengaluru, along with sub-Saharan poverty in Bihar. Yeah, like there's a huge disparity. Silicon Valley, yeah, Bengaluru is very, very high up with the tech stuff. Wait, someone said North India is poor because of Muslim invasion and South is rich because Muslims didn't invade and protected by Northern India, though... Also, I believe due to this, they were lynching his own state people. What happens in Kaputa, Mangla Sutra talks? Then how is
Uttar Pradesh richer than southern states during independence. Yeah, exactly. This is just fear mongering, saying that it's poor because of Muslims and rich because Muslims didn't invade. I say that's fear mongering. It's definitely a lot deeper than that. Um, I don't understand this. Explanation Stoneface, editing Stoneface, research Stoneface, consistency clown. Brother, don't get angry. What? That's right, bro. I don't understand this comment whatsoever. These channels the best example of quality over quantity. Yes, it is. Bro, what videos do you make? When you highlight the comparison state, it looks much worse. Gazab, keep up the good work. What? It looks much worse? How do you make your videos, bro? Do you use any software? Also, do you write any code for custom videos like showcasing state maps? I mean, you can just do all that in video editing, right? You don't need custom code or anything, do you? I mean, I could probably do a lot of this. I don't, obviously, because I'm lazy, but I mean, you could do a lot of that with enough video editing knowledge. Nice video and information, brother, and congratulations 300K. Many more success. Oh, nice. Bro, now please give regular videos and justice for the lady doctor who was okay. Well, I'm not going to say that on YouTube, but yeah, this did happen. Terrible, terrible, terrible. Whew, man. Justice should be served. Yes, I agree. I think India doesn't consider Odisha as a state. No one talks about it. It is left behind, isn't it? Nice video, love from Bihar and Odisha. Save West Bengal. Um, we this is I read this comment on another video. This is like a copy pasta or something. India most populous state is most poor state. Bro, I'm from Jharkhand, and I noticed that even you ignored Jharkhand and Chhattisgarh, only named Jharkhand when talked about mineral, jub facts, but oh, maybe we should. When the states are ignoring the facts and who will publicly pay attention to, and I don't see my state developing in coming years. It's not even been 24 years since it became a state. I have already seen 13 CMs. I don't know. Again, I don't know what CM stands for. So far, this is how a developed India will be made? Question mark. It is more like it is going towards weak shit Bharat. Oh my god. Sorry, Bharat. Bharat. How do you would think I would be able to pronounce these words? It's been like 8 months since I've been learning about India. You would think I'd be able to pronounce these words. Oh my god, I'm incompetent. My incompetence, Bharat. I am incompetent. It is more like it is going towards weak shit Bharat. That is a weird thing to say. And yeah, your point on mineral curse, that didn't translate. I see daily tons of coal dug just 2 kilometers from my house, but not a single kilogram of coal actually used here. Seeing this has actually generated a feeling of hatred towards my fellow Bharatias. Did I say that correctly? Yet hoping for the best and good explained video. Okay. Friend, how can we ignore Jharkhand, where the most important state is in the video? Jharkhand was part of Bihar before 2000. Yeah, we were not discussed much about the inventions after 2000 in this video. Yes, maybe that's why there was very little mention of Jharkhand, although I can understand your concern. It was hard to cover everything in one video, so I'm thinking of making a separate dedicated video for that region, mainly covering after 2000s. Sorry this is happening there. Yeah, he was showing he did a lot of stuff prior, right? A lot of stuff prior to 2000. So a lot of the states weren't separated at that point in time. Gosh, I'm upset that I'm just I what I need to do. I just need to like get down and talk and learn from from someone from India to actually how to pronounce words correctly because I'm upset at myself from being able not even being able to pronounce things right or second guessing myself.
Very well researched video, amazing explanation of visuals, hoping for equal development in each and every region of our country. Love from Karnataka. Thanks a lot. West Bengal and Bihar now, clown. Bengal and Bihar then, dead face? Weird. After a long time, but a good video. Love your educational contents. Keep on making these. All right. Where did you come from? Question mark. Okay. All credit goes to Bengali people and their elected government. Richest state of India, Tamil Nadu and Maharashtra. Good video for education. Love from West Bengal. Just love all your videos. Keep it up. Keep it, brother. Please put video regularly. You can't make these videos regularly. Like these videos are tough. These videos that Fennel's made here, these are like some the highly detailed, highly like scripted, very well researched videos, and you can't just pump those out. You to pump those out on a daily or regular basis, you would need like a content mill, like a factory, a video factory farm of some sorts, right? But yeah, he does work. I mean, I don't know if he has a team or anything, but he does very good work, and it's understandable that they're not put out on a regular basis, right? Like it's not he's not doing like what I'm doing, where I'm just like reacting to people, right? And I've had people ask me to put out more reaction videos, which yeah, I 100% could be that type of person that puts out like 3 reaction videos a day, but I don't know. I don't know. Here I'm talking about myself. I don't know. Maybe in the future, I don't know. I'd like to like somehow learn to make videos like this. I think that'd be a lot of fun. I just don't know how to start doing that, right? I'm gonna look at some of the newer comments. I'm gonna look at some of the newer comments. Central government. What is this? Central government never paid any attention to our Bengal, Bihar. Just look at how much Odisha has developed its iron product in India. Odisha number one. Such a big country, such a big population, every state has different issues, cultural, language differences. It's very difficult to run such a country in balance. True. Very sad for West Bengal. In 1960s, India's richest state in Bengali in West Bengal. Although video is comprehensive, but you're overemphasizing on FEP and its role in developments. It didn't contribute more than 15-20%, and that's also in initial years. Why West and South is more developed. Political stability, focus on health and education, socioeconomic reforms from early time, focus on infra by state government, population control, diversified industry service sector, so on. North, Uttar Pradesh, Bihar, rest, political instability, lack of family planning, caste religion dominance in politics, corruption, poor implementations and policies, too much focus on youth and government jobs. He mentioned all this. What are you talking about? He mentioned all of this in the video. These other factors have much more impact than just one freight policy. I think the freight policy has a huge importance. Uttar Pradesh, Bihar gets highest money in tax returns, so can't blame on others for your own failures. Although things are changing in hope of Bihar will join soon. And again, look, like he's saying right here, Bihar is getting the highest money back in tax returns, right? They're getting the most financial aid. But he even showed in the video that the other states were getting more financial aid than Bihar back in the day. So, and he mentioned all these things in the video. Am I going crazy? Or did he not mention all of these, at least in passing in the video? I'm pretty sure he did. Such a high value, data intensive, and graphical presentation. Hope to know the team behind its brilliant channel someday. Yeah, it's a great video. Number of factories and plants do not matter. Size of the industries do matter. I belong to Odisha, and here in Odisha, you will see huge plants, mostly mega steel and aluminum plants. We don't have mushroomed factories like Gutka and other mini and micro factories like in Goa. Mushroomed factories? I don't know what they mean by mushroom factories. What does this say? Where does this data come from? Which agency released it? I think he posts. Does he have images? Oh, he doesn't list. Okay. I thought he listed his sources, but it doesn't look like
He lists his sources, which is fine. What's the channel that I'm thinking that lists their sources? So there's a lot of channels that I watch that list their sources in the video. It's in the description of itself. Zero expressway for Odisha. All expressways are only for Hindi-speaking states and one to Calcutta. We Odisha people also want support from central government. We want expressways which will connect top cities. Build it with your own money. Wow. Yes, we are developing it by our own, but then why central government is looting our mines? I mean, they're paying for it. It should be given and taken relationship. Same with the Assam. But I don't know how people are saying Odisha is a poor state because I was working in Bangalore. Now I'm in. How do I even pronounce this word? Bhubaneswar, Odisha. Trust me, on road in every 500 meter you will see an Audi, Mercedes, or BMW. If you don't believe, please come to Bhubaneswar once. And Odisha is in top one in state with the highest GDP growth in India, and it's suppress Calcutta even after being a small state with minor 4 crore population. That means inequality is high. That's even worse. Yeah, I think you don't know about much about Odisha there. Is not a state, it's only a city, which is very small population, only 3% of Odisha's population. Very few of those cars, and 90% of those owners are corrupt. You can't judge state by some cars. Yeah. Rajasthan is performing well in much factors like poverty, GDP, and infrastructure. Central government always looted mines, even in Odisha. Oh, it's the same guy. BJP government got highest vote from middle part from MP in Odisha, but BJP government doing nothing for development. Only state government is trying its best. Okay, let me scroll a little bit. Let's see if there's anything here. Southern part of India has always been rich from decades due to, I don't know what this word is. And I can say Akan Bharat as cold. Again, I need someone point me in a direction where I can. Oh, it's embarrassing how I can't even pronounce words correctly. Oh man, that's so embarrassing. Hey, Zappy's here. Hey, Zappy. Great job again. Zappy's been around my channel for a very long time. Oh, I'm not on my Raildrick Geo account. That's fine. That's okay. Jharkhand soon. Proud to be Gujarati. Bro, it's late video. Why did you add it? It's late video? What do you mean by late video? I don't know. You're currently my favorite Indian YouTuber, and I've been eagerly waiting for your next video for months. There's a unique passion in your content that most other creators don't have, and I truly believe you have a bright future ahead. You're still young, and it's natural to make mistakes, but please be careful not to let your emotions affect your work. I've seen many YouTubers get into controversies because they let their emotions take over, and their content end up becoming toxic. I don't want to see that happen to you. Take your time with your videos. Don't rush into making YouTube your full-time career just yet. You need to work on improving your voice, and I'd also recommend practicing speaking in English. I'd love to see you complete globally and collaborate with creators around the world. I'm sure with time, you'll be able to do that. I'll be waiting for the day you surpass channels like Real Life Lore. Wow, okay. Means a lot. Thank you so much for the suggestion. Keep in mind. Yeah, this channel is amazing. Wow. It would help if I could type correctly. Yeah, I think with that we're gonna go ahead and call it there, guys. I do think again, Fennel. I mean, I'm not glazing the guy or anything, but the channel's great. He does good. I mean, the videos he makes are really enjoyable. I really like them. I mean, it also helps that these are the type of videos that I enjoy the most, right? Except for like ancient historical stuff, but he even kind of delved into that a little bit, which made me really happy. Yeah, I just like the video. I really enjoyed this video. Hopefully you enjoyed as well.
Hopefully you enjoy this commentary. Remember to go check out the channel in the description down below, and to give a like, comment, subscribe, the whole YouTube stuff. And yeah, with that, I'm leaving. Take care, guys. Thank you for watching. Goodbye.